Good morning, students. Next is our vector product or cross product. Vector product or cross product. Okay. So, vector product between any two vectors making an angle theta can be defined as vector products between any two vectors making an angle theta can be defined as the product of magnitudes of the vectors and sine of the angle between them. Okay, sine of the angle between them, and the direction is the perpendicular to the plane containing both the vectors and is given by right hand screw rule, SCREW screw rule. This is the definition. Vector product between two vectors making an angle theta can be defined as the product of magnitudes of the two vectors, and sine of the angle between them. And the direction is the perpendicular to the plane containing both the vectors and is given by right hand screw rule. Okay, suppose two vectors A and vectors B is given, and we are doing the vector product. What should be its result? Its result is product of magnitudes of two vectors and sine of angle between them. Suppose theta is the angle between the vectors A and B, then A cross B, or A vector product between B, A vector product with B can be written as A B sine theta, and it will give the direction. Okay, vector product always gives the direction. That means the result of vector product between any two vectors will always a vector quantity. Okay, here n cap is the unit vector. I am not writing here. N cap is the unit vector along the plane containing both the vectors, vector A ଆଉ vector B. Suppose vector A ଆଉ vector B जदि ये प्लेन रे अछंती ताहेले डायरेक्शन आइदर ऊपर को हेबो किंबा तळ को हेबो. ओके, इनटू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर हेबा दरकार. ओके, सो आम प्रॉपर्ली टिके बुझी पड़िबा कोन अछि. सो वेक्टर प्रोडक्ट दुईटा वेक्टर रो जदि वेक्टर प्रोडक्ट करा जाउची, एंगल जदि दुई जन को भितरे सपोज थीटा अछि, एंगल जदि थीटा अछि ताहेले इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स. हला दुई जनकर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. तांको दुई जनकर भितरे साइन एंगलटा सेटा भी मल्टीप्लिकेशन हेबो. एंड द डायरेक्शन, यार डायरेक्शन अछि, डायरेक्शन क्वाड हेबो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स. दुईटा वेक्टर जोआडे अछंती, जो प्लेन रे अछंती, तांको टू परपेंडिकुलर हेबा दरकार. परपेंडिकुलर माने कोन? परपेंडिकुलर माने होची 90 डिग्री. 90 डिग्री हेबा दरकार. दुईटा प्लेन ये प्लेन रे अछंती, हा कि नै? वेक्टर ए और वेक्टर बी ये प्लेन रे जेहेतु अछंती, डायरेक्शन आइदर अपवर्ड नहेले इनवर्ड हेबा दरकार, ऊपर को नहेले भीतर को हेबा दरकार. ओके, एंड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. गोटे अच्छी राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल हिसाब से आमको जीवाको पड़िबो. राइट हैंड स्क्रू रूल, हाँ, व्हाट डज इट मीन राइट हैंड स्क्रू रूल? राइट, व्हेन वी आर putting our curling fingers. Okay, these are the curling fingers. Suppose A cross B करूଛ ताहेले A cross B कला आउ thumb will give the direction of the resultant vector. Okay,
सो राइट हैंड स्क्रू रूल हिसाब से हमको जीवाक पड़ो आईटा आइदर अपवर्ड हेबो नहले डाउनवर्ड भीतर को हेबो डायरेक्शन टा एन कैप रो डायरेक्शन एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द plane containing both the vectors a and next is the properties. First one is your it is anti-commutative. Scalar product is commutative whereas vector product is anti-commutative. Commutative. What does it anti-commutative? Anti-commutative means if A cross B is equal to B cross A or not. It is no. It is not. It is minus. Why? Because suppose A cross B, A is this one, B is this one, angle theta. So A cross B, then the direction is upward. Direction is upward. ऊपर को हेबो डायरेक्शन A क्रॉस B रो whereas सेम B क्रॉस A जदी करूजो ताहले कोआडे हेबो डायरेक्शन टा तळकू. सो एटा नेगेटिव वेक्टर हे गला जेहेतु नेगेटिव वेक्टर सेति एठी नेगेटिव गोटे लागुछ. ओके सो A क्रॉस B is equal to minus of B क्रॉस A. So it is anti-commutative. First property. ओके जेहेतु एटा क्रॉस अछि सेति पय एटा को क्रॉस प्रोडक्ट मध्ये कोआ जाय. सेकंड वन इज योर it is distributive over additive. It is distributive over addition. Over addition. Okay. A cross B plus C can be written as A cross B plus A cross B plus A cross C. So A cross B plus C, this is in bracket रही है equal to A cross B plus A cross C. It is distributive over addition. Third one is that suppose if I want to write A cross A, then what should be the value of this one? A cross A mod of A into sine of angle. So what is theta here? Theta is your here 0 degree. Since theta is 0, so sine 0 is equal to what? 0. So this value will give you the 0 n cap. That means it is giving null vector. Okay. And if we are calculating only magnitude, then the magnitude is 0. Okay. So vector product between two vectors, same vector is always a 0. That means vector product with a vector with itself is always 0, null vector. Next one, if theta is equal to 0 degree or 180 degree, then what should be the A cross B? जदि दीटा गोटे डायरेक्शन आड़ को थिबे A आउ B ताहले तांको भितरे वेक्टर प्रोडक्ट केते हेबो? So A B sin 0 degree, here theta is 0 or 180, so sin 0 kete 0 or sin 180 also, sin 180 is also how much? 0. So A cross B is equal to how much? 0 degree. Next one, if theta is equal to 90 degree, then what should be the value? Theta जदि गोटे वेक्टर जदि एपटे हला आ गोटे वेक्टर एठी हला आ ए दु जन को भितरे जदि एंगल टा केते अछि 90 degree अच्छी ताहले what should be its value? A cross B is equal to AB sin केते अच्छी एंगल 90 degree. Sin 90 रो value केते 1. So AB it is the maximum. Sin 90 is equal to 1. Next properties. Since A cross A vector will always give the 0, so we are having 3 unit vector. So I cap cross I cap, what should be its value? I cap रो magnitude, again I cap रो magnitude आउ तांको दु जन को भितरे केते एंगल अछि 0 डिग्री. सो एटा केते दबो वैल्यू 0. ओके आउ एटा वेक्टर क्वांटिटी दबो magnitude जदी हमें काढिबा ताले एटा 0 बतेइबो. बट इट सो हमें सिमिलरली I cross I जेमती पाइचे 0 इक्वल टू J cross J केते दबो again 0. K cross K केते दबो 0. So we will write this one as 0.
This is also one important formula. You can say I cross I, J cross J, K cross K always give 0. Suppose I want to do the vector product between I cap and J cap. What should be the value? I cap from mode into J cap from mode into sin केते डिग्री हबो I जदी कोन कहिथिली x एक्सिस आड़ को I अछि आउ J एक्सिस J cap कुआडे y एक्सिस आड़ को केते एंगल 90 डिग्री. So this is sin 90. So I mod J mod sin 90 यूनिट वेक्टर एटा यूनिट वेक्टर n cap वर्तमान ये n cap कुआडे हबो n cap कोन n cap होची आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. सो I क्रॉस J कोची माने एपोटे कुआडे हबो ऊपर को कोटा थिबो आ गोटे k cap z एक्सिस ए भडा कि ऊपर को अछि कि नै z एक्सिस तो z एक्सिस आड़ को कुआडे थाए k cap. सो एटा को कोन लिखि परिबा ये जगह में कोन लिखिबा ये जगह में लिखिबा k cap. सो वैल्यू टा केते देला एटा 1 एटा मध्य 1 एटा मध्य 1 आ एटा k cap. सो I क्रॉस J रो वैल्यू केते देबो k cap. एटा बहुत इंपोर्टेंट. व्हाट इज I क्रॉस J इक्वल टू केते दोची k cap. तो सिमिलरली आमे लिखि परिबा I क्रॉस J इक्वल टू k. J क्रॉस I इक्वल टू केते हबो J क्रॉस I एंटी कम्यूटेटिव. सो ऑब्वियसली इट इज माइनस k. आ आमे गोटे कहूची सूत्र फार्मूला गोटे. So from this formula you can know this is I cap, this is J cap, this is k cap. What is I J cap ए भलिया लिखि देछि I cap J cap k cap. सपोज जदि मु यार्ड को गली ताहले एटा पॉजिटिव आउ एपोर्ट को जदि आसुची ताहले सेटा नेगेटिव. तो देखो केमती I क्रॉस J केते होची I cross J equal to k but it is positive. Got it? I cross J equal to केते होची k होची but it is positive. When I am doing the vector product between J and I, J cross I जदि करूची ताहले कुआडे जाउचो यार्ड को जाउचो जेहेतु यार्ड को जाउचो एटा कोन हबो नेगेटिव. तो J cross k सॉरी J cross I केते हला k cap किंतु एटा नेगेटिव. Got it? Similarly we can write I cross k I cross k केते हबो I cross k एपोटे जाउची. सो इट इज नेगेटिव I cross k नेगेटिव J. सिमिलरली k cross I केते हबो k cross I J cap. नेक्स्ट वन इज योर J cross k केते हबो J cross k इट इज पॉजिटिव एपोटे जाउची कि नै एंटी क्लॉकवाइज जाउची तो इट इज पॉजिटिव हबो. सो पॉजिटिव केते हबो I cap J cross k आ गोटे जोटा रहिला सेटा I किंतु एटा पॉजिटिव I cap. सो k cross J केते हबो k cross J I cap हबो किंतु एटा कोन हबो ए भलिया बुलुची सेति पय एटा नेगेटिव I cap. गॉट इट? सो एटा गुडा को हम फार्मूला हिसाब रे जाय. ओके नेक्स्ट वन इज योर if vector A is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and vector B is equal to bx I cap, by j cap, bz k cap. ताहेले what is the value of A cross B? Then what is the value of A cross B? A cross B केमते लिखि परिबा A cross B equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap cross bx I cap plus by j cap plus bz k cap. तो या सहित आमे पूरा होल को क्रॉस प्रोडक्ट करिवा या सहित पूरा होल को क्रॉस प्रोडक्ट करिवा या सहित पूरा होल बी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करिवा. ओके तो जदि गोटे गोटे कर करिवा ताहले हमर रिजल्ट कोन देबो रिजल्ट ए भली आसीबो आमे ताकू मैट्रिक्स फॉर्म रे भी लिखि परिबो I cap J cap k cap एटी रहिला वेक्टर A रो कंपोनेंट along I axis along J axis along K axis. Similarly एटा bx by bj एटा डिटरमिनेंट फॉर्म रे रहिला.
So you have to remember like this I cap, j cap, k cap. अब एठी तमे कोन करिवो कंपोनेंट गुडा को रखिवो प्रथमे a वेक्टर कंपोनेंट तापरे b वेक्टर कंपोनेंट. ओके या को जदी आमे सिंपलीफिकेशन करियो ताहेले I cap into ay bz minus az by ହେଇଗଲା I cap ay bz minus az by minus j into एटा छाड़ी देबो ये रो आ ये कॉलम को छाड़ी देबो आ लिखियो नेक्स्ट ax bz into ax bz minus az bx again plus k cap एटा दुटा को छाड़ी दियो रो आ कॉलम एटा दुटा रहिला so ax by minus ay bx. This is the last final result of a cross b. अब एटा वेक्टर फॉर्म रे अछि I j आ k अछि सेति पय वेक्टर फॉर्म रे अछि. एटा को तमे जदी वेक्टर प्रोडक्ट करिवो I cap j cap k cap then also you will get this one. Okay, so we have to remember this one a cross b equal to this one. यार फॉर्मूला जानि छ तो यार फॉर्मूला ये भलिया अछि. सपोज एटा a b c d e f g h i रो वेक्टर जदी काढिबो ताहेले फॉर्मूला टा लिखि दै छी a into e I minus f h minus b d I minus b तो f g plus c d h minus e g. Okay, this is the formula. Determinant रो एटा गोटे फॉर्मूला टा तो आमे डायरेक्ट a क्रॉस b को ए भलिया लिखि परिबा. Okay, again next properties 7 this is 8 number this is 9 number. So आमे कोन जानि जे a क्रॉस b equal to a b sin theta unit vector n vector. So mode of a cross b is equal to केते हेबो a b sin theta vector और रहबोनी काहे कि magnitude we are considering only magnitude so we skip this unit vector. So a cross b ro mode केते हला a b sin theta. Got it? From this one what is the value of sin theta? So sin theta is equal to a cross b ro mode divided by ab. ab means what? It is only magnitude. A cross b ro mode divided by a ro mode or b ro mode. Magnitude of a into magnitude of b. We can again calculate magnitude of a and b by formula. One of the formula you are having root under ax square plus ay square plus az square. Okay, from that we can calculate sin theta. Okay, that's all.